मेरा नाम अमान तारिक है और मेरा भाई असदुल्ला तारिक और उसका दोस्त हैदर अली शाह मुझे मजबूर करते हैं कि मैं वी लॉग्स बनाऊं। और वी लॉग बनाते बनाते उनका वी लॉग एम्पायर मुझे टर्की में ले आया इस मजदूरी के चक्कर में। माई नेम इज़ वॉल्टर हार्टवेल वाइट एंड दिस इज़ माई कन्फेशन। एनीवेज सो आई डोंट नो, आप लोगों को पता है अब तक मैं टर्की में हूँ फॉर एक पैलेस्टाइन मीडिया फोरम है तवासुल के नाम से। उनकी कॉन्फ्रेंस थी यहाँ पे, एक नर्ड कॉन्फ्रेंस थी ऑफ जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट, और पूरी दुनिया से आए हुए हैं यहाँ पे। और आई डोंट नो क्या वजह है, बट उन्होंने हमें ढूंढा था ऑनलाइन एंड दे लाइक्ड आवर वर्क, तो उन्होंने हमें बुलाया यहाँ पे, होटल दिया है, फ़्लाइट की टिकट्स वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बट यहाँ मेरे वी गो थ्रू अ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो यहाँ पे मैंने की हैं और आइंदा भी करने लगा हूँ। एक तो क्योंकि टिकट ऑलरेडी पेड फॉर था और 3-4 रातों का होटल, तो मैंने अपना ट्रिप एक्सटेंड करके इसको थोड़ा एक छुट्टी भी बना लिया। तो आई एम गोना बी मेकिंग व्लॉग्स अबाउट आई गेस खाना पीना, टूरिस्ट स्टफ हियर, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी मीटिंग सम पीपल जो यहाँ पे हैं। होपफुली एक थिंक टैंक है, उनके लोगों से मुलाकात हो जाएगी। TRT जो टर्की का सॉर्ट ऑफ अल जज़ीरा इक्विवेलेंट है, एंड उनकी कुछ पाकिस्तानी टीम है, उनसे मुलाकात हो जाएगी। और एक दो और फन सरप्राइजेज है। अगर हो जाए मुलाकातें तो फिर वो उनको डाल देंगे इन व्लॉग्स के अंदर, बट अगर नहीं हो पाती तो फिर सिर्फ खाना पीना ही है वो होगा। बहरहाल कॉन्फ्रेंस पे प्राइमरली अरब रिप्रेजेंटेशन थी, बिकॉज तवासुल एक अरबिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म ही है एक्टिविज़म का और ये सारा। लेकिन इस बार ये उन्होंने एक्सपेंड किया और अब वो इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया के लोग भी बुला रहे हैं। अफ्रीका से लोग आए हुए थे, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका से। स्पेनिश की भी काफ़ी अच्छी रिप्रेजेंटेशन थी बाय द वे, स्पेनिश और पोर्चुगीज़ की, बट इंग्लिश के भी लोग थे। कुछ टिपिकल थे अमेरिकन ब्रिटिश जर्नलिस्ट और एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट, थोड़े जो मशहूर मशहूर हैं। लेकिन इस बारी उन्होंने सरप्राइजिंगली पाकिस्तान और इंडिया को भी काफ़ी जगह दिया। और जो डिफरेंट किया उन्होंने इस बारी कि सिर्फ कन्वेंशनल जर्नलिस्ट नहीं थे, जो कॉलम निगार वगैरह, बड़े ब्यूरो चीफ, ये वो, इसके साथ उन्होंने यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और डिजिटल एक्टिविस्ट, डिजिटल जर्नलिस्ट, इस तरह के लोगों को भी बुलाया था। एक एक दो अरब बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स में थे। तो पाकिस्तानी खैर इन्फ्लुएंसर कोई नहीं था, बट अरब वर्ल्ड के इन्फ्लुएंसर्स थे। हमारे साथ आई थिंक एक रैंडम हैपनस्टांस हुआ कि उन्होंने एक AI एल्गोरिथम का कोई टूल इस्तेमाल किया था, और उन्होंने कहा था कि हर मुल्क में कौन क्या वीडियोस बना रहा है, तो उन्हें हम पाकिस्तान में मिले थे। सो लक होगी हमारी, आई गेस। बाकी यहाँ पे मौसम जो है वो 6 के करीब है, 5-6 डिग्री होता है, रात को 3-4 हो जाता है। इट्स नॉट वेरी कोल्ड। बिल्डिंग्स, सॉरी बाय द वे अगर शोर है, मेरे पीछे रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, बिकॉज जो ये जिस एरिया में, इसका नाम है पेंडिक, और पेंडिक सॉर्ट ऑफ एक मिक्स यूज़ कमर्शियल स्लैश इंडस्ट्रियल एरिया है। जो कन्वेंशन सेंटर है जिस होटल में हम रह रहे हैं, वो एक बड़ा सा ह्यूज बिजनेस और इस तरह की कन्वेंशन का सेंटर है। काफ़ी ज़्यादा कन्वेंशंस हो रही हैं, प्लस बहुत ज़्यादा लोग जो टूर पैकेज पे आते हैं, जो हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह करने आते हैं, तो वो लोग भी इस होटल में, आई सीन सम ऑफ देम, लाइक पीछे से बाल उड़े होते हैं, यहाँ लगे होते हैं लाल, वो दाने दाने हर जगह होते हैं। अरबी ज़ुबान के अतबार से कॉन्फ्रेंस काफ़ी बैंगर थी, यानी इनकी प्रेजेंटेशंस, बड़े बड़े एकेडमिक्स, इंटेलेक्चुअल्स। अब प्राइमरी इसका मकसद, अगर देखें, दो होते हैं, राइट? तशहीर करना अपने आइडियाज़ की, और दूसरा नेटवर्किंग करना। ऑब्वियसली नए आइडियाज़ तो इन कॉन्फ्रेंसेस पे डेवलप नहीं हो रहे होते। जिन लोगों ने अपने एक्टिविज़म के लिए, अपनी रिपोर्टिंग के लिए आइडियाज़ डेवलप किए होते हैं, वो उनको यहाँ लेके आते हैं और फिर वो नेटवर्किंग करते हैं, राब्ते बनाते हैं, आपस में शेयरिंग होती है। लेकिन एज़ फार एज़ दी एजुकेशनल ट्रेनिंग इज़ कंसर्न्ड, वो वर्कशॉप्स अरबी वाली बहुत अच्छी थी, इंग्लिश वाली माठी थी। उनमें से एक वर्कशॉप मैंने खुद होस्ट की थी, बिकॉज उन्होंने पूछा था कि आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, तो मैंने साफ बात की थी, हमारी कोई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम सिर्फ होस्टिंग और इंटरव्यूइंग का काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे होस्ट बनाया था एक वर्कशॉप का। अगेन सॉर्ट ऑफ हैप हैज़र्ड सी थी। आई डेंट फाइंड इट टू बी टू एजुकेशनल, बट शुगल था, बिकॉज आई गॉट टू मीट लॉट ऑफ जर्नलिस्ट वहाँ पे। बाकी जो उनके सेमिनार्स थे वो बहुत तगड़े थे, बिकॉज वो अरबिक इंग्लिश मिक्स थे, और उसके अंदर जो एकेडमिक्स थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वो बड़ी हैवी हिटर्स थे। कुछ लोगों के मुझे इंटरव्यूज़ करने का मौका मिला है, अनफॉर्चुनेटली सारों का नहीं मिला, बिकॉज इस तरह से ऑर्गेनाइज होती है। एंड अगेन बिकॉज सलमान नहीं है, और वो जो नेमत होती है वो घर की मुर्गी में से दाल बराबर होती है, बट जब जब सिर्फ दाल मिल रही हो तो फिर सलमान मुर्गी याद आती है। खुद बनाना वीडियो काफ़ी मुश्किल होता है इस कैमरे के साथ, और मैंने 2 माइक तो हैं, तो होपफुली ऑडियो सारी क्लियर होगी इंशाल्लाह। टर्की इम्प्रेशंस, इस्तांबुल इम्प्रेशंस, यार एयरपोर्ट तो इंसेन था।
अभी भी एक एयरपोर्ट है सबिहा गोकचे, यहाँ करीब है इस एरिया के, बट क्योंकि मैंने फ़्लाइट बुकिंग अपनी खुद की थी और इनसे मैं पैसे लूँगा आज इंशाल्लाह, वो जो होते हैं रीइंबर्समेंट टाइप, इन्होंने लोगों को इधर लैंड करवाया था, बट जो मेन इस्तांबुल एयरपोर्ट है ना, जहाँ से मैंने मतलब जहाँ से मैं आया हूँ, वो बहुत आला था यार, बहुत अच्छा एयरपोर्ट था। इट वाज़ वेरी लाइक जैसा यूएई के बहुत कमर्शियली कन्वीनियंट वगैरह, बट द स्टाइल वाज़ मोर यूरोपियन, लेस स्टेराइल, थोड़ी सी पर्सनैलिटी थी। सब यूएई वगैरह में हर चीज़ थोड़ा स्टेराइल और बोरिंग सी होती है ना, उस तरह नहीं थी। और काफ़ी कन्वीनियंट था। लोग ढीले-ढीले हैं, अब तक मुझे समझ आया कि थोड़ी देसी टाइप होते हैं, ज़रा पेंडू टाइप होते हैं। यू नो मैस्कुलिन कल्चर है काफ़ी मर्दों की तरफ से, लाइक ऊंचा बोलना और ये वो, ज़रा बॉयज़ आर लौंडा माहौल टाइप होता है। आज अभी तक होटल में खाना खा रहा था मैं, बिकॉज ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस के लिए बिजी होते हैं। आज पहले दिन में बस थोड़ा सा टाइम था, तो मैं खाना खाने गया था। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, लाइक मैं अगर आप गूगल मैप्स खोल लो तो आप मोहल्ले के सॉर्ट ऑफ लोकल रेस्टोरेंट ढूंढ सकते हो। और ये थोड़ा सा मिडिल क्लास मोहल्ला है, जो पीछे मोहल्ला है यहाँ पे, बिकॉज सारा इंडस्ट्रियल और बिजनेस एरिया है। यहाँ दफातर वगैरह, शिपमेंट और कार्गो रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। आई थिंक गैस की कंपनी भी यहाँ पे इनकी है। तो पीछे जो एरिया है वो काफ़ी मिडिल क्लास है, इन द सेंस के लाइक यहाँ पे सब छोटे फ्लैट्स के अंदर रह रहे हैं और बाज़ारें छोटी छोटी तंग सी हैं। वहाँ पे प्रॉपर उनकी एक हलवाई की दुकान, जिस तरह नाश्ते वाली दुकानें नहीं होती लाहौर में, वो मिली थी। आई थिंक गुनाल नाम था, उनाल, आई थिंक गुनाल नहीं, सॉरी उनाल समथिंग, उस्ता समथिंग। अगेन मैं उसके लिंक्स वगैरह डाल दूंगा, हैदर से कहूँगा प्लीज़ इसके अंदर कोई फ़ोटो लगा दे दुकान की। टिपिकल वो टर्किश नाश्ता, सुबह नहा धो के निकले थे मैं तो वहाँ पे लाइक वो एक होती है, एक उनकी डिज़र्ट होता है, डिज़र्ट नहीं होता, सब ब्रेकफास्ट फूड, वो क्रीम होती है, उसमें हनी होता है और पिस्ताशियोज होते हैं और मलाई शलाई होती है। वो इंसेन था। मैंने मेन था, बहुत अच्छा होता है, थोड़ा सा एसिडिक और मीठा होता है, ये चक्षु का टाइप। तो अगर आपको पसंद है तो आई थिंक उस तरह का। मैंने फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनाई अब तक, बिकॉज ये थोड़ा सा लेस टूरिस्टी एरिया है, तो यहाँ पे एक कैमरा लेके अगर मैं गूफी सा आदमी घूम रहा हूँगा तो थोड़ा ज़्यादा डम लगेगा। बट जब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा कॉन्फ्रेंस एरिया से इंशाल्लाह, तो मैं ज़्यादा वीडियो पे कैप्चर करूँगा। किलो नाश्ते में मैंने मेन था, इनके सुजुक सॉसेज होते हैं और अंडे शंडे थे। द कुजीन का थीम जो है ना, इट्स अबाउट द स्प्रेड, मुझे ये समझ आया। इट्स अबाउट स्प्रेड एंड हर चीज़ के फ्लेवर की प्रिजर्वेशन और इन्हांसमेंट, यानी कि किसी चीज़ को मास्क नहीं करते, यानी अंडे का जायका बाकायदा आता है, बाकायदा सॉसेज का अपना एक फ्लेवर है, हनी का फ्लेवर है, या नट्स को अगर हाईलाइट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल किसी डिश में, पीनट्स को या ऑलिव्स को, तो हर इंग्रेडिएंट को सॉर्ट ऑफ अपनी तरह हाईलाइट करते हैं। स्पाइस और सीजनिंग जो है वो स्पेयरिंगली इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप अगर देसी ज़ुबान में बात करें, थोड़ा फीका होता है इनका खाना, बट बहुत मज़े का होता है, फ्रेशनेस का। फॉर एग्जांपल बहुत हैवी नाश्ता खाया था, लाइक 4 लोव्स ऑफ ब्रेड मैंने खाई थी नाश्ते के साथ, जो वो देते हैं आपको, एंड दे सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट यू टू ईट ऑल ऑफ इट। बट हैवीनेस की फीलिंग नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर 10-11 बजे आप कोई देसी नाश्ता कर लो, तो आई डोंट थिंक यूड बी एबल टू फंक्शन। मैं उसके लिटरली अभी वॉक करके आ रहा हूँ वहाँ से, रेस्टोरेंट से, यहाँ से आई थिंक 20 मिनट दूर था। तो I'm fine. Even though it was heavy food, carbs काफ़ी थे खाने के अंदर, लेकिन आई थिंक इंग्रेडिएंट क्वालिटी अच्छी थी, क्लीन था खाना काफ़ी। एंड एट द एंड डिज़र्ट के साथ दे गेव अस a little shot of milk. It was very good दूध, by the way, and it worked, I think. हर चीज़ बैलेंस के बारे में है, sort of like मीठा कम मीठा होगा, जो बहुत तेज़ मीठा होगा वो कावे के साथ देंगे, यानी चाय जिसको कहते हैं ये। और जो थोड़ा हल्का मीठा होगा, धीमा टाइप का, उसका दूध ज़रा उसको, उसकी फैटीनेस को ज़रा बाहर लाने के लिए। इट्स अ होल डिफरेंट, आई थिंक, फूड फिलोसफी। एज फार एज द कॉन्फ्रेंस इज कंसर्न, आई हैव माई कंप्लेंट्स अबाउट इट। आई थिंक काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती थी। बजट ह्यूज था, 1000+ लोग थे यहाँ पे, इनसेन। आई होप कोई विजुअल्स हम ऐड कर पाएंगे, बिकॉज कॉन्फ्रेंस की वीडियोस तो लेटर आएंगी, जो उन्होंने प्रोफेशनल ग्रेड प्रोडक्शन की हुई अपनी, बट मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस ली थी, तो होपफुली कुछ दिखा पाएंगे। देखें, सिनिकली अगर बात करूँ तो मुझे मौका मिल गया टर्की में घूमने फिरने का, बट कॉन्फ्रेंस पे आई थिंक मुझे 8-10 अच्छे जर्नलिस्ट का राब्ता मिला है, जो अलाउ करेगा कि हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए अलबत्ता मेरी रिस्पेक्ट बहुत बड़ी है। मुझे 3-4 बहुत अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मिले थे। एक मिसबार के थे, अनस नसीफ नाम था उनका, उनके साथ मैंने वर्कशॉप की थी। यार उस बंदे का काम बड़ा अजीब था, लाइक सो it was work that I didn't think important until I saw it up close. It was work like
somebody has to do it वाला काम जो होता है. So for example जो प्रोपेगेंडा वीडियोज़ इसराइल से निकलती हैं, लाइक जस्ट BS प्रोपेगेंडा नहीं होती कि लाइक कोई फेक न्यूज़ चलाते हैं वो, अगर पैलेस्टाइन के ख़िलाफ़ कोई डेथ नंबर को नंबर टोल को वो करने के लिए मिनिमाइज या कोई भी चीज़ इस तरह की जो फोरेंसिकली एनालाइज करते हैं ना लोग, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और फिर इंटरनेट मीम्स को ब्रेक डाउन करते हैं कि ये रियल है कि नहीं है, ये वीडियो कितनी पुरानी है. आई फेल्ट लाइक कि यू नो it's a lot of leg work, a lot of donkey work, but I guess somebody has to do it. और करीब से उसके काम को देख के, अनस के काम को देख के मुझे हुआ था कि नहीं यार काम तो बहुत हैवी है ये. Like somebody has to go through the footage, और वीडियो एक्सपर्ट हर ग्रेन को और हर पिक्सल को यू नो हर फ्रेम को देख रहा है, फोरेंसिक एक्सपर्ट कुछ और देख रहा है, यू नो. आई मीन अच्छा तजर्बा था. आई मीन ऐसा मेरे जहन में कोई बात नहीं आ रही, कुछ मैंने काफ़ी हैवी नाश्ता खाया हुआ है आज. आई थिंक मैंने TRT के कुछ जर्नलिस्ट को मिलना है, पाकिस्तानी है. मेरे पास 9 मई के केस में फरार यहाँ पे आए हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कि मौका मिला कि मजीद भाई भी मिल गए हैं. माजिद निज़ामी नहीं था, मैं आपसे मजीद कह रहा हूँ, मैं वो मर गए. सलामुअलैकुम. यहाँ पे आए हैं तो माजिद भाई भी मिल गए. माजिद निज़ामी साहब आप लोग देखे हुए हैं, पॉडकास्ट चैनल पे भी आए थे एक बार, और काफ़ी और भी जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तानी मेरे ख्याल में. जी 2 से 3 और लोग भी हैं. तो माजिद भाई क्या वाइब आई है आपको कॉन्फ्रेंस से, और क्या मतलब सीखने को मिला है, और तो क्या कम्युनिकेट करना चाहेंगे आप ऑडियंस से? जी मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा संजीदा मौजू है फ़लस्तीन का मसला, और इसमें इसका एक इंसानी पहलू है जो उजागर होना चाहिए. ये अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, अरब ममालिक का मसला है, मुसलमानों का मसला है, इससे निकल के ये एक इंसानी मसला है. और उसकी बुनियाद पे ही मेरा ख्याल है ये कॉन्फ्रेंस की बुनियाद है कि वो तमाम लोग जो इस हवाले से सीरियस कंसर्न्स रखते हैं, इस चीज़ को दुरुस्त मानते हैं, वो उन लोगों को इंटरेक्शन का एक मौका दिया गया है, और वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं. ज़्यादा यहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, और बाकी कुछ जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको भी दावत दी गई है. तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है यहाँ पे मैंने देखा है माजिद भाई कि अरब जर्नलिस्ट जो है ना, उनके साथ साथ जो अरब व्लॉगर्स भी हैं ना, यानी इंटरटेनमेंट व्लॉगर्स वगैरह भी, मैं उनसे मुलाकातें हुई हैं कुछ से, तो वो इस काम में फिर भी एक्टिव हैं. पाकिस्तान में ये नहीं है. पाकिस्तान की ऑनलाइन कम्युनिटी के अंदर मुझे ऐसे फील हुआ है कि उस तरह से कवरेज नहीं देगी पैलेस्टाइन को, ना टीवी जर्नलिज्म में वैसी कवरेज दी गई है पैलेस्टाइन को. ये क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है. उसकी वजह ये कि शायद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की तरजीहात हैं सोसाइटी की, उसमें ये चीज़ शामिल नहीं है. उसकी कुछ सियासी वजूहात भी हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल में जो PTI वर्सेस स्टेट और हुकूमत और PDM, ये सारा कुछ जो चलता रहा है, उसके अंदर कहीं ना कहीं ये मामला निगलेक्ट हुआ है. और इस वक्त तो 90% जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे टॉक्स हैं वो यही हैं कि इमरान खान, आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उससे वो बाहर नहीं निकल रहे. तो इसलिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस मौजू पे ज़्यादा से ज़्यादा बात होनी चाहिए. बिल्कुल. यहाँ पे मैंने एक और चीज़ देखी है कि जो इनके दरमियान, यानी अब मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम के लोग हैं यहाँ पे, इंतहाई कंजर्वेटिव प्लेटफॉर्म्स के लोग भी हैं, मजहबी रुझान के लोग भी हैं, लेकिन कम्प्लीटली जिनको आप मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, लेफ्टिस्ट कहेंगे, उस तरह के लोग भी हैं. ये अपने इश्यूज़ के अंदर ऐसे यूनाइट करके, यानी कॉमन कॉज के ऊपर ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. हमारे यहाँ अगर ये थिंक फेस्ट होता या कोई और होता तो उसके अंदर सारे लेफ्टिस्ट होते, नहीं तो कोई जमीयत का इवेंट होता तो सारे मजहबी लोग होते. यानी ये एक डाइवर्सिटी को बड़ी आसानी से अब सेलिब्रेट कर पाते हैं, और वो बड़े आसानी से एक मेल्टिंग पॉट में आके अपनी टॉक्स कर पाते हैं. पाकिस्तान की सोसाइटी का मेरा ख्याल है ये एक मसला है कि हमारी ना कुछ बेसिक्स डिफाइन नहीं है. एक बेसलाइन होनी चाहिए, अखलाकियात होनी चाहिए, नज़रियात, उनमें हमारा इत्तफाक होना चाहिए. कॉमन पॉइंट्स, वो कॉमन पॉइंट्स माजरत के साथ हमें सोसाइटी में नज़र नहीं आते. इसलिए वो जो जजीरे हैं ना, वो बने हुए हैं पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर. तो बाहर दूसरी दुनिया में डाइवर्सिटी को बहुत तरजीह दी जाती है और कॉमन ग्राउंड्स तलाश की जाती हैं. अभी जिस तरह मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसका जो बेसिक पॉइंट है वो ये है कि जो एक ह्यूमन ट्रेजिडी हो रही है वहाँ पे, उसकी बुनियाद पे वो मार्क्सिस्ट हैं, नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम है, अरब है, नॉन अरब है, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हैं उस कॉमन ग्राउंड के ऊपर. तो पाकिस्तान का मसला ये है कि हम सियासत में, मज़हब में, मुआशरत में इस हद तक इंतहा पसंद हो चुके हैं कि हमारे लिए कोई कॉमन ग्राउंड्स निकालने की कोशिश करता है, उसे बुज़दिल होने का ताना दिया जाता है.
या फिर हम ऐसे लोग जो मिल के बैठ के धीमे लहजे में बात करने की कोशिश करते हैं। बारीक कार्रवाई। हाँ, उनका ये बारीक कार्रवाई है। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कौमों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वो मिल के बैठ सकें, यानी मुश्तरक प्रिंसिपल्स, कोई ह्यूमन प्रिंसिपल्स। यहाँ पे मैंने यही देखा है कि मतलब स्पीकर्स जो हैं बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड्स के, और वो हर बंदे को इक्वली सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब मैंने आके उनसे मैंने पूछा कि आप क्या, मैं क्या मैं पाकिस्तानी यूट्यूबर हूँ, वो उसी तरह सलूट मारते हैं, उसी तरह आपसे बात करते हैं, आपकी राय पूछते हैं, आपको अपना मौक़िफ़ देते हैं। यानी कि जो लेवल ऑफ सीरियसनेस है ना, वो अक्रॉस द बोर्ड वो यूनिवर्सल है, यूनिफॉर्म है। वो ऐसे नहीं है कि आप एक्सपर्ट हैं आप नहीं हैं, आप अरब हैं आप नहीं हैं। तो ये अब फ़लस्तीन के कॉज को क्या ऑर्गेनाइज तरीके से भी मीडिया पे इग्नोर किया गया। बिकॉज मैंने देखा रिपोर्टिंग जो थी वो बड़ी, टीवी रिपोर्टिंग एटलीस्ट थी, वो बड़ी सब ह्यूमन थी। यानी फैक्ट्स थे, नंबर्स थे और विजुअल्स थे आदमियों के मरने के। कोई ह्यूमन स्टोरीज, इंटरव्यूज़, गुफ्तगू ऑन ग्राउंड, ये सब कुछ नहीं, रिपोर्टिंग नहीं मिली हमें वहाँ पे। असल में पाकिस्तान में अलमिया ये हुआ, एक तो सियासी हालात ख़राब थे, दूसरा ये कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने अपनी टीम्स भेजी वहाँ पे, लेकिन ये एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जो जिसका दौरानिया बहुत बढ़ गया। उसकी वजह से भी कुछ लोग जो है वो थोड़ा पीछे हट गए कि सस्टेन नहीं हो पाए। लेकिन वो जो उसका ह्यूमन एलिमेंट है वो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं होना चाहिए था, वो हुआ है। और अब जब हम देखते हैं यूरोप में, अमेरिका में या बरतानिया में जो आवाज़ें बुलंद होती हैं, वो जो आप बात कर रहे थे ना कॉमन ग्राउंड की, और जो यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि वो कुछ बेसिक पॉइंट्स होने चाहिए कि जिनके ऊपर आप बात करें। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इत्तेफाक कर लेना चाहिए। नहीं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इत्तेफाक करते हैं उनको ताना मिलता है। हाँ जी, मतलब आप देखें ना कि पोलराइजेशन इतनी बढ़ गई है कि आप कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं तो आपको ताना मिलता है। ये एक कॉम्बैटिव सिचुएशन जो बन गई है, ये सिर्फ एक वजह तो नहीं है, थोड़ा सा हमारा फॉरेन पॉलिसी का भी आपको लगता है रुझान जो है वो चूँकि सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ चलता है, तो वो उनकी साइलेंस जो है उसने हमारी साइलेंस को भी थोड़ा सा एग ऑन किया। बिल्कुल किया। उसकी वजह ये कि हमारे पास एक लड़खड़ाती भी मईशत है। हम कोई स्टांस लेने की कोशिश करते हैं या सोचते भी हैं, कोई उधर से मसला मसाइल जैसे ही शुरू होते हैं तो एक ऐसा हमें धचका लगता है कि सारा कुछ इधर उधर हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से फूंक फूंक के चलना पड़ता है स्टेट को। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद भी हमारे सामने यमन की मिसाल है। वहाँ पे कैसे हालात ख़राब हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में बिल्कुल उन्होंने आउटशाइन किया इस मामले में। बल्कि वो यही बात कर रहे थे कि जो अल्लाह ने इंडिपेंडेंस दी है, ब्यूरो चीफ पेशावर वाले भी यही बात कर रहे थे कि यार हमारे पास हर दुनिया की अल्लाह की दी हुई हर चीज़ है। मतलब यहाँ वो मारा मारी नहीं है पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली शाम और उसके गिरदनवा के अंदर है। उसके बावजूद हम बड़ी छोटी चीज़ों के ऊपर आके कहते हैं कि यार अब हम नहीं कर सकते पार्टिसिपेट। यानी हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस को एक्सक्यूज़ बनाया जाता है सर, मेरे ख्याल में बिल्कुल बनाया जाता है। और देखिए मैंने तो इस चीज़ को नोट किया कि पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि आपको डाइवर्सिटी की सेंस ही नहीं है। आप कहते हैं या तो यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, दरमियान में कुछ नहीं है। डाइवर्सिटी का जो लफ्ज़ है उसका जो मानी है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तानी माशरे को सीखने की अच्छी ज़रूरत है कि मुख्तलिफ़ ख्याल के लोग, मुख्तलिफ़ कौमियतों के लोग, मुख्तलिफ़ नज़रियात के लोग वो आपस में बैठ सकते हैं, उनको बैठना चाहिए। और यही चीज़ सर, ये इसमें आपको लगता है कि हमारी माशरत का फेलियर है? बिकॉज टेक्निकली तो ये एरिया बहुत डाइवर्स है साउथ एशिया का, या ये हमारी स्टेट के पर्टिकुलर फेलियर्स हैं पिछले 70-80 साल की ट्रेनिंग के अंदर? बस वो कहते हैं ना कि जी हादसा एकदम नहीं होता, तो इसकी परवरिश हुई है बाकायदा 20-30-40 साल के अंदर ये चीज़ें चेंज हुई हैं। और अब वो इस हद तक चेंज हो गई हैं कि उसमें जो लोग उसको अनडू करने की बात करते हैं वो दीवाने लगते हैं। कोई धीमे लहजे की बात करता है, वो उसको कहते हैं कि ये इसकी समझ नहीं आ रही। तो वो जो मार धाड़, चीखम पुकार, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो कि बदकिस्मती है, नहीं होना चाहिए ऐसे। नहीं माजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अब मेरा ख्याल है बाकी इवेंट्स को भी कवर करते हैं। माजिद भाई, कोई आखिरी आप क्लोजिंग में बात करना चाहें कि अब पाकिस्तान जाके क्या ऐसे एफर्ट कर सकते हैं कि फ़िलिस्तीन की कवरेज और उसकी कॉन्वर्सेशन को एक नया रंग दिया जाए, एक और नया एंगल दिया जाए पाकिस्तान के अंदर? बिल्कुल, जो ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज़ हैं और जो ह्यूमैनिटी के मसले हैं फ़िलिस्तीन के अंदर, वो मेरा ख्याल है कि ऐसी कॉमन ग्राउंड है कि जिसके ऊपर किसी को इख्तलाफ नहीं है। बाकी चीज़ों पे तो लोग, यानी कि फॉरेन पॉलिसी के एतबार से इख्तलाफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए, बट कवरेज, प्रोटेस्ट, रैली वगैरह इन चीज़ों की इजाज़त होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। और मीडिया पे भी हमें इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए कि वहाँ के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं।
ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि 9 अक्टूबर हुआ और उसके बाद ऐसे हो गया, एक पूरी हिस्ट्री है 70 साल की जिसके अंदर ऑपरेशन मौजूद है, तो ये कॉमन ग्राउंड है जिस पे हम काम कर सकते हैं। माजिद भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। Thank you. Alright, I have accosted and have officially sequestered Abby Martin from the Empire Files. So if you guys grew up watching her stuff, she's old, I can confirm. This is a comedy show. No, man. it's more of a casual sort of. Oh my god. So Abby Martin's been covering the various conflicts in the Middle East, particularly the genocide in Gaza and Palestine in general, and the occupation. So we're glad to see a lot of faces at this conference that we know. But a lot of times with these kinds of conferences, there is a cynicism that you keep getting the same kinds of people. Like we want, it would be ideal if we had the people who were naysayers over here. Would they ever show up to one of these things, you think? I mean, I think this conference is mostly for reinvigorating the community and motivating us to continue our work, because it does get very isolating and atomizing, especially in the system that we live in the Western world, and with the American media being so complicit in the genocide. So yes, I agree that of course I wish that Zionists were here to see the war crimes and have it put in front of their faces, but I think above all, it's really helping me actually and inspiring me to keep going. Right, because because you guys depend on online journalism and online reporting, there's been a lot of digital suppression on platforms like Meta and YouTube. Have you experienced any of that? I have, yes, and we know that Zionists also are heavily embedded in X and Meta. We know that every American media institution, that these so-called papers of record, they have IDF soldiers, their children are in the IDF, they have literal Israeli spies working there, but of course they say if they hire Palestinians, it's too susceptible to bias. So of course you're going to see a very concerted effort to suppress and algorithmically control the narrative, but it's not working. Instagram, Meta, and X, you're seeing it completely blow up. Do you think it's been like a brute force effort from like a popular support across the globe, but people just sort of brute force the algorithm to keep pushing content that is in support of Palestine or highlighting the genocide? 100%. It has been entirely a grassroots effort, and we've seen this burgeoning narrative exploding from Palestinians for the first time, being able to dictate the reality themselves and no longer have Zionists controlling what they have for so long, which is the reality on the ground. Finally, Palestinians are able to show us with their own social media, and that's an incredible thing, and that is going to transform the narrative forever. We'll get to the meat and potatoes, which is the idea of the ceasefire that's going on. Netanyahu is clearly trying to sabotage it. Do you think that this was the incoming Trump administration that sort of fast-tracked this, or there was something to do with the Biden administration as well? Well, I think Biden is a war criminal of the highest magnitude. He clearly could have ended this on day one with a phone call. He chose to keep the slaughter going for 15 months longer than it needed to be. We know that the ceasefire deal was almost word for word what it was back in May. That's Biden's fault. I think Trump did force the hand of Netanyahu, but at a great cost to Palestinians. As we know, there's a bunch of sweetheart additions to the ceasefire, which includes being able to go back in after 42 days, annexing the West Bank, and lifting sanctions on settlers. And so it's going to be a very tough road ahead. But I think, again, the masses have awakened, and you can't put the genie back in the bottle. Right. Do you think that this time around, was this a vote? Was this on the ballot, the Palestine cause, or do you think it was way down there in terms of importance? I think that it was the number one issue of why Kamala Harris lost, and I can prove it. Because the political establishment has been gaslighting us for months, that this had nothing to do with the loss. For months prior to the election, they didn't even want to mention Gaza. It was just a cursory kind of thing that they nodded along to. Oh, we're working for a ceasefire, we're working for a ceasefire, as we know now. According to a poll that just came out 4 days ago, Gaza was the top issue for voters that voted for Biden in 2020 and did not show up for him in 2024. Right. Number one. It cost her the election. She was willing, her subservience to Israel and the Zionist state, Other they than were the willing fact to that she lose was the not, election. other than the fact that she's not a real person, and she's a million ants operating a skin suit. But do you think that Gaza was the number one issue? Don't you think it's a bit of a stretch? No. Why do you feel so confident that the American people or the voters found their conscience in voting for Trump or abstaining from the vote, as opposed to just voting for the lesser evil?
I think that we see clearly. I mean, the people did not show up for her that they did for Biden. It's not that the country became more right-wing. That's not it at all. I think that it's very clear that the genocide in Gaza was a motivating factor for youth, particularly, to stay home. That's clear as day. So no third-party candidate was considered, you think? No, because the political system's completely rigged. People know that there's no chance in hell that a third-party candidate can win. They've rigged every facet of the electoral system against them. But we saw in places like Dearborn, for example, Jill Stein got 30% of the vote. I mean, if people all mobilize behind third-party candidates, of course that would change. But unfortunately, people would choose to abstain than invest in the third-party system. We'll switch gears a bit. What about the situation in Syria? A lot of your colleagues, especially on the left, have been, so the axis of resistance has been covering the Syrian civil war, the attempt at the coups. What do you think the situation on ground is right now? It's not good. It's not good. No, I mean, Israel claimed victory. I don't want to take away from the Syrian people. Obviously, it was a moment of celebration to see Assad fall, and I don't want to take away that sentiment. But I think that we need to be realistic about what this means in terms of Israel's expansion. We already see the normalization between Israel and the new leader of Syria. I mean, the fact that they have just let Israel bomb relentlessly, seize land twice the size of Gaza within the immediate days after the fall of Assad, it's very worrisome. Because when you have the US and Israel celebrating a victory, that doesn't mean anything good for the Syrian people, and certainly not Palestinians. So there's an argument that we will make that Syria is not a jumping platform to combat the colonial presence in the Middle East, and that the Syrian people should be a separate entity that get to decide their own fate in the future. Of course. And that is something that I think is universally agreed upon. Of course. But the problem that comes with this sort of geopolitics is that, you're involved with the region. Do you think that it's inevitable that the Syrian people will be in a conflict with Israel directly? That's a very good question. I think inevitably, yes, because Israel has to continue to kill and kill and kill to stay in the same place. And so they're going to continue to go with their greater Israel ambitions, and that includes taking a lot of Syria. And so there's going to become a fracture point, right? That Syrians need to decide if they're going to allow that to happen or not. Right. In closing, do you think the Trump administration or the American deep state generally is done with the Israeli project? Because there's a lot of talk about how it's too heavy a burden on their foreign policy, and we've been hearing this for the last 20, 30 years. Do you think that this is eventually going to become true, or is it true now? I think it eventually will become true if the American people put enough pressure on the government to stop it. We see the political establishments completely bought and sold. We saw AIPAC primaried 2 politicians who were pro-Palestine in the last election. The hope only lies with the American masses standing up and mobilizing and forcing the hand of politicians. As far as Israel becoming untenable, the Zionist project support becoming untenable, right now, Israel is the most important military outpost for the U.S. It is essentially a military base. And so right now, we've seen that Zionism and U.S. imperialism outweighs everything. I mean, the U.S. has wanted its eyes on the prize, Iran. They've already talked about they wanted Lebanon, they want Syria, and they want Iran. This has been a plan in the making for the last 20 years. They see it as a geopolitical chessboard, right? And so, of course, they're going to use Israel as a means to do that. They're going to use Israel as their battering ram. So again, no, I think Trump is going to escalate attacks, greenlight annexation of the West Bank. He's personal friends with Netanyahu. Jared Kushner has a fucking bedroom in his house for this man. I mean, it's sick. But again, it has to come with the American people forcing their hand and saying no more. And I have seen consciousness explode in a way that I have never imagined. And for the first time in my life, I do see an end. You've covered Zionism on the ground. You've interviewed people. Your interviews are famous, talking to regular, average, everyday Israelis, sort of reflecting the spectrum of how psychotic Zionism can be and how sort of possible and normal it could be. What about the Jewish diaspora in America, in Western Europe? What do you think is the sentiment on ground over there? It's totally transformative. Right now, polls show 25% of American Jews are anti-Zionist. We have about 19% of American Jews who are young. Jewish people. I don't like this kind of anti-Semitism.
young Jewish Americans, Right. 19% of the youth who are Jewish sympathize with Hamas. That's pretty 33%, tough. 33% say Israel's committing genocide. That's a signifying factor of where the sentiment is going. The younger people have been radicalized by this, and not just this, by the election, by the complacency of the Democratic Party in continuing this Do you slaughter. think that this kind of fear amongst the American establishment about the youth is what's forcing their hand with TikTok and the banning? Yes. You don't think it's a data issue? You don't think it's an anti-China issue? I think it's that's a benefit. It's a one benefit. stone, multiple birds kind of Yes. situation. Yes. Right. Do you think they'll go through with the TikTok banning? Yes. Do you think so? Yes. They already said that they will unless someone buys it. Right. And the Supreme Court recently It's already greenlit. yeah, they said the Yeah. green light, Yeah. you can't delay it any further. Why do you think the Trump administration was trying to delay the banning? I didn't even know that They were he trying was. to delay it, yeah. I don't know. Then the court I mean, said- Trump's a capitalist at the end of the day. I mean, he probably Party sees want a it good better for deal. business. You know, Right. I mean, There's a general trend. Australia's banned social media for people under 18 or 16. America's clearly making moves with the banning of TikTok. The CEO of Telegram was arrested in France. You see a crackdown on alternative social media platforms. And if you look at the works of the economist Yanis Varoufakis, for example, the tech fiefdoms that exist are all based out of Silicon Valley. Yes. Even Europe doesn't have a tech fiefdom. Right. Except OnlyFans, by the way, which they can keep. But so the only alternative tech platforms or landscapes that exist are Chinese. Do you think the throttling of these alternative platforms is inevitable, and do you see a rise in sort of a restriction on free speech in the Western world and America? 100%. I mean, the fact that our reality is curated by tech billionaires. I mean, we are algorithmically guided by the hand of a few Silicon Valley billionaires, and they're all Zionists. I mean, Elon Musk is a defense contractor. I will not stand for this because I might be eligible for the H-1B visa. So listen, woman, I have to manage a gas station at some point in America, so I will not stand for this. You could always work for Elon Musk. I could always be a gardener I at love the Elon Trump- Musk. I will sacrifice my life for Elon Mar-a-Lago. Musk. Yeah, Mar-a-Lago, right. I think the garden stuff is from South America. It's usually the gas station sort of. That's us, South Asians. I'm messing with you. Do you think that this curated reality? Do you think people are aware? Is there a self-awareness in American society about how curated their media No, landscape is? I mean that's the problem, is that people get the reality that they construct, and so the algorithm shows you what you want to see. I mean, for me, all I see is what's going on in Gaza. You would hope that people are seeing the same thing, but I think we all know that they're not. And so it's very unfortunate that everyone's siloed off into their own realities that affirm what they see on X, what they see on Meta just affirms what they already believe. And so that's a big problem that we're going to have to combat larger than social media can ever provide us the means to do so. Right, and this is where these kinds of conferences come in, where people can meet and sort of network and then help each other work their particular territories. Habib Martin, it's been a pleasure. I was in Lahore in 1967. Oh, so a few years before he was born. 1967, yeah. And you were not born. I'm kidding. I'm just pulling your leg. And you know, the people at that time, they would grab us and take us from one invitation to another invitation. Come in my house, come have food. It was absolutely, it was fantastic. And, Thank you, François. I am from Lahore. Yeah. Thank you, François. See? And then I came a few more times to the strategic center of Islamabad, I think, yeah. And I love the mountains further up. I'm with François, a famous political scientist, and also somewhat Turkish apparently. François, how are you doing? I'm fine, and I'm glad to be with you and with Thank you very Pakistan. So François has agreed to discuss with us the unfolding situation in Syria. And earlier, before we started recording, François mentioned that there is a
widespread narrative in the Muslim world as well as in the Western world that this is a CIA coup and it's Al-Qaeda and it's ISIS and it's greater. You have even religious paranoia about greater Israel and all of these things. François, what's the actual reality on ground with the Assad regime going away and with the Syrian rebellion or the Syrian resistance coming into power? Thank you for welcoming me, allowing me to move to Pakistan. The end of Bashar has two sides. The end of Bashar by itself and the identity of those who took him down. And the reactions have been influenced by the identity of the so-called Islamists who took power. Now, let me tell you that I lived extensively in Syria until 2012. I was closely following the political forces. And I happened to have a link with this Jolani group, which I followed, and I spoke to them when they were in Idlib, so I had some background on who they were. Now, you must understand that among the left political forces, let's say anti-imperialist forces in the Muslim world, Axis of resistance. Yeah, axis of resistance. There is a tendency that we are the specialist in liberating people as long as we do the job. If someone else moves in and does the job, he is suspect of not being sincere. And you have a reason for this. In the past, in some specific situations, Islamist revolutionaries have been considered more or less close to the global Zionist movement. When? The worst, the most symbolic picture, I don't know if you know this person, Bernard-Henri Lévy in French, he is the symbol of the Zionist movement, okay? But what you need to know is that when the Rabi' al-Arabi, when the Arab Spring started, the first reaction of France was, we support the dictators. We support Ben Ali, we support Mubarak. Then they realized that they made a mistake, so they changed completely and they supported the revolutionaries in Libya. And at that time, you had people like Bernard-Henri Lévy, a symbol of the Jewish racist Zionist supporter who came to Benghazi, said, congratulations to you Islamists. And this picture cost a lot of reputation. Another story, which is simple. Al-Qaeda created by the Americans. Why? Because for a few months, the anti-Soviet agenda of the US was the same as the anti-USSR agenda of the Afghan fighters, whether Arab or Afghan, okay? But 10 years later, when they blew the World Trade Center, was Al-Qaeda allied to the US? Of course not. So very often you have people who misunderstand the fact that there can be very quickly, a few years... Temporary alliances and temporary... Not even alliances. Alignment. And also you have another reason why the left, both in the Arab world or in the Muslim world and in the West, they refuse the legitimacy of the Islamists. It is because the Islamists have beaten them in the polls. And you do not want to accept the idea that your enemy, your adversary, the guy who can do something good. For this reason, you have this very weak narrative that they are Mossad. Or a couple of days ago, you had protests, and I was very glad to repost these violent protests supportive of Palestine in Syria. Yes. Thousands of people were supportive of Syria because the idea was, oh, they are going to move like MBC or MBS. They are going to Abraham Accords. No, we are not allowed to speak in the future, but I do consider that although Sharia will not start a new war immediately with Israel,
he will stay in the axis of resistance. What about the expansionism that Israel has been exhibiting in Syrian territory? What do you think will be the appropriate response from the new regime? I don't think there will be an immediate military response, but we should not. I mean, the balance of forces militarily is 1 to 10 nowadays, okay? If I was Shara, I would not start a massive war against Israel now. But what is happening is another story. It's the fact that the transparency, the new transparency of the Israeli narrative is such that probably we are entitled to say that the Palestinians, they are paying a very high price, what will probably be considered a victory in years to come, because the reputation, the image of Israel is downgrading day after day. Even in Israel, by the way, even in Israel, tensions, people moving away from the country. This is secret document, but they are moving away from the country. But also in the Western world, including the Jewish community. Now, I want to say one last nasty word about the Qiyada al-Arabiya, about the Arab leadership. Until now, they are doing the worst that can be done, and they must be part of the landscape. They must be part of the criticism of what is happening in Gaza now. Right, there you heard it from François himself. François, thank you very much for your time. Thank you to you. Thank you to you. Bye-bye. All right. So I have with me Fatima Bourhim, who is a journalist for TRT Spain. Yes. Fatima is Moroccan Spanish. And Fatima, you've been covering the conflict since the 7th of October, I'm guessing. Not that much, but... But a few months after yes, that, right? So yes. at least a year now. Yeah. What's the coverage like in Spain? Obviously, Spain is one of those few exceptions within Europe that is partial to the Palestinian cause. What's the attitude like, and then what's the coverage on the media like? Of course, the coverage on the media, on the mainstream media, is not as good as we would like it to be, right? There is like this stand that is, hey, let's be neutral, while neutral is not always the right side of the history on what we're saying. I have to say the Spanish coverage, the Spanish media has been more inclined to Palestine as it is, what's happening, calling it a genocide, not calling it a conflict, right. But we're still fighting for it. I'm working in TRT Español, that is basically, it's based here in Turkey, and it's for the audience in Spain and in Latin America. Right. One thing is the coverage, the media coverage, and the other thing is the attitude of the population, of the people in the streets. Spain, right. And we have to say, I've been seeing like the attitude in general was so, I would say, pro-justice. In Spain? In Spain, in general. Of course, there is polarization as everywhere. Right. But when people get to know what's happening, when people, thanks to the media and the activists and the communicators that are showing the truth, the journalists in Palestine, 24/7 coverage, people are seeing what's really happening, and they are taking a stand. They are going out to the streets to claim for a free Palestine and to go against the genocide. What about Zionist sentiments in Spain? Because there's a significant Jewish diaspora in Spain. Are they mostly anti-Zionist, or is there a both sidesism where they're like, we support Palestine, but we also support Zionism? Is there that kind of balance, or is there an outright dislike or distrust towards Zionism? Fortunately, and of course I'm not generalizing, but there is a clear difference on the stance for pro-Palestine and for the protection, or the not forgetting that there are Jewish roots, Sepharad roots in Spain, and it's completely different. The Jewish people and the Zionist right. lobby and so on. Fortunately, I would say that the Zionist lobby in Spain is not as strong as in Germany or in the UK, I might right. say. So people, they know how to make this this difference between the groups, and they are, if they are pro-Palestine, they are anti-Zionist. Right, There is which is a natural assumption. there is no There's no middle gray ground, zones. both No. sides are all right. No. In terms of the current ceasefire, what do you think is going to be, as a citizen of a country that put pressure on Israel, somewhat diplomatic pressure, what do you think is going to be the result of, in the rest of Western Europe,
in light of the ceasefire? Do you think there's going to be further potential sanctioning of Israel or further diplomatic pressure? The expectations, the ceasefire, like alhamdulillah, is a needed one, right? We've been asking for it for a long time. And now my fear, personally speaking, is that we somehow absolve the responsibilities of the criminals. It's like, now a ceasefire is reached, so not more pressure to put on it, right. You know? So this is the risk, I would say, nowadays. But people are still going to go out and to push for the sanctions to be done, to be made, right? Or for like we cannot keep silent, and this is a call for everybody to keep talking about Palestine. A ceasefire is not the end of genocide. A ceasefire is not the end of occupation. And we know that the blockade of Gaza has been going for so long, and is still going after the ceasefire. And it's a ceasefire that is a bit of an unknown one, because we don't know what's going to come next. Yeah, and it's a bittersweet situation, right? But in general, I would say we don't know. We don't know what's going to be the reaction of the international community. What would be your message to young people right now who might be complacent considering the ceasefire has taken place? What would we need to do? A ceasefire is the minimum, is the bare minimum, and it means something big for the population in Gaza, alhamdulillah, after 15 months of non-stop suffering and bombardment. But it's not enough. It's not enough, so we cannot stop talking about what's happening. We cannot keep silent about the other issues. We have to keep united. For me, one of the messages that I think it's pushing me and motivating me to go ahead and keep doing what we're trying to do, even if it's an atom, if it's little, but is basically, let's keep united, because this is not something that is going to be respond only from the international community, because we already saw that no, that's not the response. But of the unity of people, we have to be one. We have the global South needs to unite against the colonialism, against the imperialism, because this is the same plan in different parts of the world, in different times of the history, unfortunately. So my message would be, let's keep united, let's keep doing what we're doing, and let's aim for the best and have hope. Because I feel sometimes, and psychologically speaking, it's not easy, and we get tired, right? Of course, we're all tired. We're all tired, but it's been a long flight. Yes, but we cannot lose hope, because from a religious perspective, Allah is there, and there's always hope. There's always a great future ahead, inshallah, with the best of the intentions. So keep going. That was Fatima Bourhim. Thank you very much. Thank you very for your much. time, Fatima. Thank you. Jazakallah.